Jai Swaminarayan student. Today we are going to start the Boolean algebra in the computer fundamental unit. Earlier in the previous classes we have covered up till now the basic introduction of the computer. Then we have discussed about the memory storage unit in the computer, where we have studied the basic classification of the memory, primary, secondary and the cache memory. Then we see the different types of software we are using in the computer system, application based software, system software. So today we are going to discuss about the Boolean algebra and the logic circuit application. So what is a Boolean algebra? Okay, the content for this chapter is, first we see the introduction to Boolean algebra, then basic concept and function of Boolean algebra. Then there should be the introduced to logic gates, because we know that the logic gates is the implementing units for the Boolean expression. Then logic circuit and the Boolean expression. So the algebra which is used for simplifying the presentation and the manipulation of propositional logic. Okay, so this Boolean algebra, it is used for solving the propositional logic. Propositional logic, it means the logic which having the Boolean answer, either true or false. Okay, and why it is needed to study? Because we know that in the computer there should be the language which is to be implemented only a binary language. Okay, the input whatever we are giving to the computer system, it ultimately convert it into the binary language, that is either 0 or 1. 0, that is a low, 1, that is a high. Okay, so it is also known as the switching algebra. It is invented by the George Boole in 1954. It is mainly used for simplifying and manipulate the electronic logic circuit in the computer. So first we see the basic concept for the Boolean algebra. We know that the binary number system, it deals with the 0 or 1. Okay, everyone knows that the binary number system is deal with 0 and 1. When we are to represent the 0 in the binary system, we are representing as 0 0. When we are going to represent 1, that should be the 0 1. 2, that should be the 1 0, and 3 should be the 1 1. Okay, we know that the this is the combination used for the two units when we are going to give the two units as a input to the any logical circuit. The three basic logical operation that should be taken place in the Boolean algebra, that is the AND, OR and NOT. ठीक है, ANDing means we have to multiply the two inputs units, OR means we have to do the summation of the two inputs unit, and NOT means we have to take the inverse of that input units. So first we are going to see the AND operation. Okay, so AND operation, it is used for the logical multiplication. Okay, जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम दो इनपुट यूनिट का, वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वी रिक्वायर द AND यूनिट, एंड वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. सो दैट डॉट सिंबल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द AND ऑपरेशन. ठीक है, सो AND ऑपरेटर हैज एन आउटपुट 1 if all the unit or if all the inputs are 1, otherwise the output is 0. So in this truth table you can see when this is input A, input B, and this is output C. So if we are doing the ANDing operation, so we know that in the AND operation output is 1 if all the inputs are 1, otherwise output should be the 0. So for the first number, that is for the 0 0, when the input is 0 and the input B is the 0, that case both input are 0, so we get the output is 0. Why? Because the 0 into 0 output should be the 0. Then 0 1, 0 into 1 output should be the 0. 1 into 0 output should be the 0, and 1 into 1 output should be the 1. So in the AND operator it should be concluded that when the two input units is 1, then only the output should be the 1, otherwise output should be the 0. So this is the truth table for the AND operation. Next, truth table for the OR operation.
OR operation is used for the logical addition. Okay, so this is used for the logical addition operation. The plus sign, it is used for represent the OR operation. In case of AND operation, we are using the dot operator. Okay, so in the OR operator has an output 1 if any of the input are 1. Okay, so output should be the 1 if any of the input are 1, otherwise the output should be the 0. So see the truth table for the OR operation. See here, for the input A 0, input B is 0, then output C should be the 0, because 0 plus 0, it should be the 0. Okay, then input A should be the 0, input B should be the 1, that is 0 plus 1. In that case output should be the 1. So in the OR operation, it is mandatory to either any one of the input should be the 1, then only we get the output as a 1. So for this, input A is 1, input B is 0, in that case also we get the output as 1. So for the both the input, 1 1 should be the there, then output should be the 1, of course, because 1 plus 1, that should be the 1 here. Okay, so this is the truth table for the OR operation. Then the NOT operation. NOT operation, that is used for the complementation part. It just take the inverse of the input. So if we are giving the input as a 0, we get the output as 1. Just inverse. Okay, that is a complement value. If we are giving input as 1, output should be the 0. So this is the truth table for the NOT operation. Next, there are the some basic theorem used in the Boolean logic. We have to learn by heart, so it should be memorized one. Okay, so for the OR operator, just always remember a plus 0 equal to n, a plus 1 equal to 1, a plus a equal to a plus a complement equal to 1. Okay, for the AND operation, a into 0 equal to 0, a into 1 a into a, and a into a complement, that should be the 0, but a plus a complement should be the 1. And for the NOT operator, a plus a complement equal to 1, a dot a complement equal to 0. Okay, these are the other theorem used for in the Boolean logic. Some other De Morgan's law. What are the De Morgan's law? A plus b equal to b plus a into b equal to b into a. Sometimes the question will be asked like to prove LHS equal to RHS using the truth table. So in that case, we have to draw the truth table for the left hand side, and we have to draw the truth table for the right hand side, and we have to LHS equal to RHS. We have to verify the theorem. Okay, so this theorem you should be learn by heart. You just memorize it because it is used for solving the Boolean expressions. Next, Boolean expressions. Okay, Boolean function. So what is a Boolean function? Boolean function is an expression formed with a binary variable. Okay, so it is an expression formed with a binary variable. It is the combination of Boolean operators such as AND, OR and NOT operator. तो Boolean expression किसको बोलेंगे? ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे जिसमें हम एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बाइनरी वेरिएबल से बनता है. बाइनरी वेरिएबल यानी वी आर गिविंग द इनपुट एज अ टू. Okay, so for example, consider this first expression x dot in bracket x bar. I say complement value as a x bar. Okay, x bar plus y equal to x into y. So first we have to consider the input value. So what is, there should be input value x, then y, x complement, then x complement plus y, then x into x complement plus y equal to x into y. Okay, and for the 4 combination, that is 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so for that 4 combination, first we have to calculate the x bar. So what is the value of x bar? That is the complement of x. So see here, in the x there should be the 0, so x complement will be the 1, then 0 again 1 1, then 0 1, then 0. Okay, then x complement y, then multiply this value into this y input. So 0 into 1, ORing we are doing. Okay, so x bar plus y summation we have to do, because here is the x bar plus y, then 0 plus 1 1, 1 plus 1 again 1, 0 plus 0
0, 1 plus 0, sorry, 1 plus 0, 1. Okay, then we will multiply this value with the x. So multiply this value with the x, so we get 0, 0, 0, 1. And finally we will see x into y, that is again 0, 0, 0, 1. So both value are matched here, so we have proved that LHS is equal to RHS. Such type of questions is usually asked in the examination, so do the practice for this. I will give you the practice problems in the as a assignment. Okay, so you have to solve that problems, and if you have any query with that, you can ask me. Next, the types of logic gates. We know that the logic gates are what? These are the elementary building block of digital electronic circuit. Okay, so the common use of logic gate of element is to act as a switch, and it is used to implement the boolean function. ये जो हमने boolean function देखा अभी x इंटू एक्स बार प्लस वाई, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये हमें पता है 3 ऑपरेटर से बना है, एंड और एंड नॉट, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी रिक्वायर द लॉजिक गेट. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वी हैव टू डिज़ाइन द सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक स्विच सर्किट जिसको बोला जाता है. सो उसको बनाने के लिए वी रिक्वायर द लॉजिक गेट. तो लॉजिक गेट, अब देखो जैसे एंड गेट, एंड गेट में हमें पता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे हम 2 यूनिट दे रहे हैं, इनपुट यूनिट दे रहे हैं ए एंड बी, जिसको मल्टीप्लाई होकर हमें एक आउटपुट मिलेगा. तो एंड गेट का सिंबल हमें याद रखना है, इस तरह से हमें एंड गेट बनाना पड़ता है. और गेट में हमें पता है सम होता है, दैट इज समेशन. सो ए प्लस बी, इसका इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा वाई. देन नॉट गेट, ए को हमने दिया तो इसका इन्वर्टर है, इसको बोले थे इन्वर्टर, दैट इज, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो दीज आर द 3 लॉजिक गेट्स यूज फॉर टू सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन. दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट यूज टू सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशंस. ठीक है, सो इसको हाँ ध्यान में रखना है आपको, एंड गेट कैसे बनाना है, और गेट कैसे बनाना है, और नॉट गेट कैसे बनाना है. नेक्स्ट, एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं. सो सी हियर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, देन उसका डायग्रामेटिक सिंबल इस तरह से बनाएंगे, एंड गेट है तो, और उसका ट्रूथ टेबल. तो ट्रूथ टेबल में हमें पता है ए और बी 2 इनपुट यूनिट है, और हमें आउटपुट मिलेगा एक्स, तो 2 है तो इसलिए 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2 है तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके. ठीक है, तो इस तरह से उसका हमें आउटपुट निकालना है. तो 0 इंटू 0 अगेन 0, 0 इंटू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 अगेन 0, 1 इंटू 1, 1. ठीक है, सो दिस इज द truth table for the AND logic gate. Then next for the OR. Okay, so for the OR हमें पता है सम होता है. सो सेम कंसेप्ट है, इसका जो लॉजिक डायग्राम सिंबल रहेगा ये इस तरह से रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. सो ए और बी, ठीक है, इस तरह से बनेगा. इसका ट्रूथ टेबल हम देखेंगे 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 1, 1. ठीक है, ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड. देन नॉट हमें पता है इट इज़ फॉर द कॉम्प्लीमेंट. तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका रहेगा एक्स इज इक्वल टू ए नॉट. ठीक है, अगर ए हम एज ए इनपुट देते हैं तो एक्स में हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. सपोज हम इनपुट में 0 दे रहे हैं तो हमें एक्स मिलेगा 1, अगर हम 1 दे रहे हैं तो इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 0. उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलेंगी नॉट गेट में. ठीक है, नेक्स्ट होता है लॉजिक सर्किट. अभी लॉजिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज कंसिस्ट विद अ नंबर ऑफ लॉजिक गेट विच इज़ यूज इन कंप्यूटर टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन. ओके, सो जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स से बना हुआ जो सर्किट है दैट इज कॉल्ड एज द लॉजिक सर्किट, एंड इट इज़ यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन. जैसे हम कोई इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद व्हाट विल बी द जनरेटेड आउटपुट, ये वी हैव टू डिसाइड दैट, सो दैट will be decided by using this logic circuit. ओके, तो हमें यहाँ पे पढ़ना कैसे, सबसे पहले हमें तो बुलियन एक्सप्रेशंस आना चाहिए. बुलियन, आफ्टर द बुलियन एक्सप्रेशन वी हैव टू प्रूव दैट बुलियन एक्सप्रेशन by using the truth table. Once we draw the truth table, we will solve that boolean expression using the logic gate. After the logic gate, we will draw the logic circuit, and we will prove that the given circuit is verified for this particularly equation. Such type of question is asked in the examination.
So see, this is one of the logic circuit. Here what happen, x and y are the two input variable where we are doing the ORing operation here, because here is written as x plus y. It means we are doing the ORing operation. Okay, then z we are taking, we are using the inverter there, so it means that should be the z complement value. Once we get the value from x plus y, we are giving that input and z complement input to the uh, ending operator, logic gate and logic gate. Okay, so we will get z complement into x plus y. So in this way we have to create the logic circuit. Okay, then for the practice point of view, you just go through this expression, don't see the solution now. Just see here, what is this, x into y into z whole complement. ठीक है, x complement into y into z होल कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का है तो x के इन्वर्टर वैल्यू लेनी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, उसको एंडिंग करना पड़ेगा y और z के साथ. ठीक है, तीनों का भी आपको फिर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और जैसे वो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलती है फिर से उसको आप एंडिंग करोगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसका ऑरिंग करोगे और दोनों के साथ आप एंडिंग ऑपरेशन करोगे. ये सॉल्यूशन है, बट व्हाट आई फील कि यू जस्ट डू द प्रैक्टिस, यू जस्ट ड्रॉ बाय योर सेल्फ एंड देन चेक योर आंसर. ठीक है, क्योंकि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क इन द एग्जामिनेशन, 5 5 6 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ईजी है. तो solve this problem and do the more practice. Okay, so in this way, so we are seeing the various boolean algebra. It simplify the logic circuit to increase the work efficiency of digital devices. Okay, so logic circuit can be built for any binary electric or electronic device, including the switches, relay, electron tubes and transistor. Okay, so these are the various यूज बाय द लॉजिकल सर्किट. ठीक है, सो आज के सेशन में हमने देखा है कि हम बुलियन अलजेब्रा कैसे क्रिएट करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे. आफ्टर दैट वी हैव सीन दी हाउ वी इम्प्लीमेंट दैट बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक गेट्स, where we have discussed about the three type of logic gate, AND gate, OR gate, NOT gate. With the help of that three logic gate, how we draw the logical circuit, okay, which is used to solve these boolean expressions. So just go through this video again, and if you have any doubt, you can freely ask me in the comment box. Okay, uh, next we are going to start the number representation in for this video series. But before that I am going to provide you some assignment question, practice questions on this boolean algebra. Just solve it. Okay, and submit the snapshot or image of that as a solution in the classwork. Don't forget to solve the quiz also. Daily I am going to upload the quiz and assignment, so you have to solve this assignment and quiz on daily basis. Okay, so thank you and Jai Swaminarayan.